आज हम ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वायरस से। ये जो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सार्स कोव 2 वायरस। WHO ने इसे नाम दिया है सार्स कोव 2। पहले हम कॉमन नाम कोरोना वायरस के नाम से भी बुलाते थे या कुछ लोग नोवेल कोरोना वायरस भी बुलाते थे। एक्चुअली कोरोना वायरस के क्लास में ये आते हैं और भी बहुत सारे कोरोना वायरस है, जैसे सार्स है, MERS है, मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे मार्स के नाम से भी जाना जाता है। SARS-CoV-2 is the seventh coronavirus known to infect human. It is declared as global pandemic on 11th March 2020. पर ये माना जाता है कि अगर WHO पहले ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर देते तो काफ़ी सारे जान बच सकते थे। No vaccine is yet confirmed. First case reported from Wuhan city, China. Transmission कैसे होते हैं? Through the droplets and nosocomial transmission is documented. ड्रॉपलेट के थ्रू मतलब चीख के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं या हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। करंट एस्टिमेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 डेज, मतलब सिम्टम्स शो 2 से 14 दिन के बीच कर सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, फैटिग, ड्राई कफ एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी एक्सेट्रा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिंड्रोम, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब 20% केस में देखा गया है। केस डेफिनेशन, लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केस का डेफिनेशन है ये। ए पर्सन विद लेबोरेटरी कन्फर्मेशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। ये बात इसलिए बोला गया है कि काफ़ी सारे केस में कुछ भी साइन या सिम्टम नहीं मिलते हैं। सस्पेक्टेड केस हम किसे कहेंगे, अच्छे से सुनेगा। ए पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी illness like fever and at least one sign or symptom of respiratory disease. क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, लाइक कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ए हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल टू और रेसिडेंस इन ए कंट्री और एरिया और टेरिटरी रिपोर्टिंग लोकल ट्रांसमिशन। NCDC वेबसाइट में हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकते हैं। A patient or a healthcare worker with any acute respiratory illness and have been in contact with a confirmed COVID-19 case in last 14 days prior to onset of symptoms. He is also a suspect. A patient with severe respiratory infection, fever, and at least one of the sign and symptom of respiratory disease like cough, shortness, and breath, and requiring hospitalization and with no other etiology that fully explains the clinical presentation, but he is a suspect. A case for whom testing of COVID-19 is inconclusive, जिस टेस्ट का कोई भी कंक्लूजन नहीं आ रहा है उसे भी सस्पेक्ट केस माना जाएगा। Definition of contact. A contact is a person that is involved in any of the following, that is, providing direct care without proper personal protective equipments for COVID-19 patient. हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बिना ही अगर सर्व कर दिया पेशेंट को, then we are contact. Studying in the same close environment of COVID-19 patient, including workplace, classroom, households, gathering, etc. Traveling together in close proximity, that is less than 1 meter, with symptomatic person who later tested positive for COVID-19. Types of contact. There are mainly two types of contact, the high risk contact and low risk contact. Let us see what is the high risk contact. Touched body fluids of the patient like respiratory secretions, like blood, vomit, saliva, urine, feces, etc. Had direct physical contact with the body of the patient, including physical examination without personal protective equipments. Touched or cleaned the linens, the clothes, or the dishes of the patient. Lives in the same household as the patient. They are all at high risk.
Other high risk contexts are anyone in close proximity, that is within 3 feet of the confirmed case without any precautions. Passenger in close proximity within 3 feet of a conveyance with a symptomatic person who later tested positive for COVID-19 for more than 6 hours. Low risk contexts who are at low risk share the same space, same class for school, worked in same room, similar or not having high risk exposure to confirmed or suspect case of COVID-19, but they are at risks but low risk. Travel in same environment like bus, train, flight, or any other mode of transit, but not having a high risk exposure. We'll study further on next video. Thank you for today.